हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। कैसा चल रहा है आपका सब। मैं आशा करती हूँ कि आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग रियली गुड एंड द पेपर आपने देख लिया होगा 2023 का प्रीलिम्स का पेपर। और जो भी जिनका भी अच्छा हुआ है दैट्स गुड, और जिनका अच्छा नहीं भी हुआ है डोंट वरी, डोंट बी डीमोटिवेटेड। 2024 प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन जारी रखना चाहिए। मैं भी कर रही हूँ प्रिपरेशन और आई एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम यू गाइज। सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन। क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम प्रोसीड करेंगे, ये सब हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। सो वी विल प्रोसीड विद पॉलिटी। बिकॉज वाई पॉलिटी, मतलब वाई आई एम स्टार्टिंग द पॉलिटी, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा है एंड द स्ट्राइक रेट इज़ ऑल्सो गुड। स्ट्राइक रेट मतलब करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी इज़ गुड। सो आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विथ पॉलिटी एंड मोर ओवर इट इज़ अ स्टैटिक सब्जेक्ट, सो मोर चेंजेस इतना होगा नहीं। और रही बात जो भी चेंजेस होगा जैसे कि गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, वो सब में आपको थोड़ा करंट अफेयर्स की करंट अफेयर्स का थोड़ा ज़रूरत होगा। तो ओवरऑल इट इज़ ए स्टैटिक सब्जेक्ट। जैसे कि आप ज्योग्राफी पकड़ लो या हिस्ट्री पकड़ लो, वैसे ही एक स्टैटिक सब्जेक्ट है। एनवायरनमेंट इकोलॉजी हो गया या फिर आपका साइंस एंड टेक हो गया, वो जितना करंट अफेयर्स डिपेंडेंट है ये इतना नहीं है। वंस अगर आपने कंप्लीट कर लिया स्टैटिक पोर्सन देन वी कैन से इट इज़ डन एंड डस्टेड। दैट्स वाई आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ पॉलिटी। हमको ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करना है, सो आई थिंक थोड़ा स्पीड में हम प्रोसीड करेंगे। सो चलिए पढ़ते हैं। तो पॉलिटी में एक्चुअली सिलेबस क्या क्या है, ये एक ओवरऑल सिलेबस है, मैंने पहले से ही लिख रखा है। सो पॉलिटी का सिलेबस में पहले आएगा, मतलब इट्स ओवरऑल सिलेबस। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, देन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। जिसने पहले पढ़ रखा है थोड़ा बहुत इनको आइडिया होगा व्हाट इज़ मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क मतलब क्या बोलते हैं कि क्या क्या मतलब क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ एंड प्रीवियस एक्ट्स, इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ये भी हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और रही बात व्हाट आर द फंक्शंस, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सब हम देखेंगे। एंड this will be an overall framework of constitutional framework. And then after that we will be studying about the system of government, and then state government, central government, constitutional bodies. प्रीलिम्स में हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता है विच इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, विच इज़ एन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी, ये सब आता ही रहता है। एक रेपिटेटिव थीम हम बोल सकते हैं। और ये दिस वन इज़ यूनियन टेरिटोरीज एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड दिस इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, इमरजेंसी प्रोविजंस और मिसलेनियस टॉपिक्स और करंट अफेयर्स। दिस इज़ एन ओवरऑल सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ प्रीलिम्स का सिलेबस. Now if we keep on expanding every topics, then how can we proceed? I'm writing it. This is so if we keep on expanding, then what we will get? So write it with me. So pillar 1, it is the introduction of polity. Okay, hope my handwriting is visible enough. Introduction of polity. Then basics definitions we will read. Salient features of constitution. Then making of Indian constitution. We will study in detail, but first of all write it down that what is there in the syllabus. Syllabus is more important than reading the topics. First of all you should know what is there in the syllabus. So write it down, we will explain it in detail. This is the pillar 1. Okay, then pillar 2, preamble. This is the face of constitution, and here we will read doctrine of basic structure in the preamble itself.
Preamble is a doctrine of basic structure, and what it is we will learn. Kesavananda Bharti case and all we will study. Fundamental rights we will study in this pillar. Here what is fundamental rights? Here we will understand each and every article in detail along with the case laws. What are the amendment that took place in this in the cases related to fundamental rights, and also Supreme Court judgments we will read in detail. Okay, all the stories related to फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 13 में क्या क्या केसेस आए, आर्टिकल 14 में, ये सारे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, और उसके रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो सब हम पढ़ेंगे, एंड ईच एंड एवरी आर्टिकल वी विल डिस्कस इन डिटेल. ओके, एंड देन फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, नाउ पिलर 3 व्हाट वी विल स्टडी इज एग्जीक्यूटिव. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, गवर्नर ऑफिस, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल. Okay, then legislature also we will read. State, union, then budget we will discuss in this pillar. Bills, anti-defection laws we will cover in this part. Okay, then judiciary we will read. This is union judiciary we'll study. Okay, so just whoever have those have little understanding of the polity, I want to just ask, is judiciary a part of a federal government? Means is judiciary is an example of federalism? So those who knows the answer, please write it down in the comment section. Okay, state judiciary, district courts, subordinate, ग्राम न्यायालय, tribunals we will study in this subject. It's a very interesting topic we will read. And tribunals, which are constitutional tribunal, statutory tribunals, okay. Pillar 5, federalism. Why I am writing down, I hope I have made it clear. Okay, legislative action, article 245, administrative relation, emergency provisions, local bodies, article 370, all this. Okay, here in the pillar 6 we will discuss about elections. Pillar 7, it's about constitutional and non-constitutional bodies, and pillar 8 will be Citizenship and Amendment Act, Citizenship Act 1955, and pillar 8 it will be miscellaneous. Okay, this is the expanded version of the syllabus.
So first we will be on introduction of the polity we will be reading, then preamble, then executive, then judiciary, federalism, election, constitution, non-constitutional body, and citizenship act, miscellaneous, and everything. This is just an overall idea of how our expanded version of the syllabus is. Okay, nothing to read, just if you want to write it down, please write it down. I just want to make you more clearer about the syllabus. Got it? स्टार्ट करें अभी. पूरा फ्रेज मतलब सिलेबस का आई थिंक मैंने बहुत बार डिस्कशन कर चुकी हूँ अभी. सो अभी हम ओवरऑल लेट्स बिगिन. लेट्स द वो होता है ना, वो ड्रम रोल डाल के हम बिगिन करना चाहेंगे कि क्या है पॉलिटी, पॉलिटी क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, डिफरेंस क्या है इसमें, ये जानते हैं. ओके, सो पॉलिटी और पॉलिटिक्स. पॉलिटी मतलब क्या है, जैसे कि द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट, लेजिस्लेटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट हेल्प in governing the country. This is known as polity. तो politics क्या है? Politics, the act of governance, act of running the government. So how they are running the government, the governance part is known as the politics. Okay, I hope I made it clear. So अभी हम पहला क्या टॉपिक था हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है and why it is needed. Okay, so ये एक बोल सकते हैं कि रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आप बोल सकते हैं. आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इवन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है. तो कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि डज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैव कॉन्स्टिट्यूशन, then you should write yes, it does have. Okay, it does have a constitution. So basically constitutions are the rules and regulations that govern a state or an organization. Okay, this is what we know and this is what we call as constitution. Okay, so you can say constitution is like a document. Okay, it is like a document. It can be it can be handwritten and it can be just not written. Okay, so does any country have a constitution that is not written? Yes, UK is the only country. मतलब UK एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ओके, and India like country, US like country, South Africa like a country. So they have a written set of constitution. और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डीप है, इतना परफेक्ट है, मैं क्या बोल सकती हूँ, इतना डिटेल्ड है. आप आर्टिकल में देखेंगे कि लॉ का मतलब भी हम लोग डिफाइन करके रखे हैं. लॉ का मतलब क्या है, कौन लॉ बना सकता है. हम आर्टिकल 13 में हम लॉ को डिफाइन करके रखे हैं और आर्टिकल 12 में हम स्टेट को डिफाइन करके रखे हैं, किसको हम स्टेट बोले. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड है. और क्यों डिटेल्ड है, इतना मतलब डिटेल का ज़रूरत क्या है. अब देख लीजिए, सपोज कि हमारा 1.4 बिलियन पॉपुलेशन और नाउ इट इज़ नाउ आई थिंक द पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल होने का ज़रूरत क्या था. वो इसलिए क्योंकि एक तो पॉपुलेशन इतना है कि सबका लॉट्स ऑफ ओपिनियंस कैन हैपन. सबका एक ओपिनियन होगा और सारे ओपिनियंस को रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी चाहिए होगा. तो मैं क्या बोल सकती हूँ, सपोज
कि सेंट्रल लॉ मतलब एक एग्जाम्पल की तरफ मैं मतलब मैं बोल सकती हूँ कि क्यों इतना डिटेल्ड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और क्या ज़रूरत था। सो फॉर एग्जांपल सैंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ ले आया, ठीक है। अब डीएम भी, अगर आप आईएएस बन गए तो आप डीएम बनोगे तो आपके पास भी एक लॉ मेकिंग पावर होगा। सपोज जैसे कि हमारा दिवाली पकड़ लीजिए, तो दिल्ली गवर्नमेंट के डीएम बोले कि 10 बजे के बाद कोई भी पटाखा नहीं फोड़ सकता। उनका एक होता है ना, उनका 10 बजे के बाद मतलब क्योंकि उनका एयर क्वालिटी इतना ही ख़राब है कि तो वो डीएम बोल सकता है कि 10 बजे के बाद आप पटाखे नहीं फोड़ सकते। तो लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। तो लोग बोलेंगे कि क्योंकि हमारा ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा नहीं है तो हम तो फिर पटाखा 10 बजे क्या, हम 12 बजे भी फोड़ने वाले हैं। तो क्या होगा? तो फिर देयर इज तो रूल एंड मतलब क्या बोलूँ, एक सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर तो खराब ही हो जाएगा। तो इसलिए हम जो डीएम का भी जो लेजिस्लेशन है, डीएम जो लॉ बना रहा है वो भी एक लॉ है। ये भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए लिखे हैं, क्यों? टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। That's why our constitution is detailed, to avoid the rupture of the law and order. मतलब अगर 12 बजे not to to avoid the cracking of avoid the crackers. Just a very silly example, but a very practical example, just to maintain the law and order. Everything is vividly written in the constitution. सोच लो कि अगर सच में मतलब डीएम का लॉ इज़ नॉट ए लॉ, डीएम का लॉ सपोज मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, सपोज इट इज़ रिटन दैट whatever the डीएम इज सेइंग इज नॉट अ लॉ, then people will randomly do whatever they want. The legislation that is made by DM will not be valid. Okay, so this is why we have updated the constitution to this much detail, right? लॉ किस किस का है? स्टेट का होगा, लेजिस्लेचर का होगा, जो डीएम बोल रहा है वो भी लॉ होगा। हम इतना डिटेल में गए हैं। स्टेट कौन होगा? जो फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, ऑथोरिटेटिवली जो स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होगा वो भी स्टेट होगा। आपको एक एग्जाम मतलब वेरी शॉकिंग पार्ट बोलूँगी। तो सपोज कोई काम कोई रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये रोड कंस्ट्रक्शन सपोज L&T कंपनी कर रहा है। सो L&T इज़ ऑल्सो ए स्टेट। यू विल बी फाइंड शॉकिंग, राइट? क्योंकि L&T कैसे बन सकता है स्टेट? वो तो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। बट नो, सिंस इट हैज़ टेकन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट द रोड, हियर L&T विल ऑल्सो बी ए स्टेट। बट हमको पहले लगता था ये स्टेट तो यार गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी होगा। बट नो, even private organization can also become a state depending upon the situation. इसलिए everything has been written in the constitution just to maintain the proper law and order, the proper regulation of the society. That's why we have formed a constitution, that too written. Okay, I hope कि हमने बेसिक समझ लिया कि why constitution is required. Okay, हमारा एस्पिरेशंस क्या है? What do we want to achieve through the constitution? We want to achieve, we want to achieve justice, liberty, equality, and fraternity. ये सब हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, जहाँ पर ईटी लगा हुआ है ना, वो सब हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लाए हैं। ठीक है, जो ये तो हम बाद में पढ़ेंगे हम किस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या डिराइव किए हैं। बट जस्ट टू नो द बेसिक्स कि ये जो है ये हमारा एस्पिरेशन है, हम ये अचीव करना चाहते हैं। दिस इज़ आवर गोल टू एंश्योर टू गिव जस्टिस टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पीपल। जो जस्टिस मतलब हम क्या, जो सोशल, इकोनॉमिक,
यही तो है जस्टिस, जो सब जो मतलब वट एवर द स्टेटस यू आर इन द सोसाइटी, सपोज आप बहुत बैकवर्ड क्लास में हो या फिर बहुत रिचेस्ट क्लास ऑफ द सोसाइटी में बिलोंग करते हो, बट द जस्टिस रिमेन्स द सेम फॉर बोथ द क्लास ऑफ द सोसाइटी. कौन सी फाइनेंशियल स्टेटस में हो डजेंट मैटर, बट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट each and every individual of the society gets the equal justice, right? So हम इंश्योर करते हैं कि हमको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस इंश्योर हो, लिबर्टी हो, इक्वालिटी हो, फ्रैटर्निटी हो. लिबर्टी मतलब यू नो endless freedom. There is no restriction bound in the liberty. We will later know what is the difference between equality and liberty, freedom and liberty, but just remain that, just understand that when there is a limitless freedom, when there is no restriction, then we call it as a liberty, and when there is a restriction, then we call it as a freedom. Oh sorry, मैंने उल्टा कर दिया. I'm so sorry. I'm saying freedom is like there is no restriction, and when liberty, we say liberty means a freedom is there but with a certain amount of restriction. Liberty is like freedom minus restriction. मतलब there will be some amount of restriction when we say it liberty. कहाँ पर लिबर्टी लगता है वो हम बाद में पता चलेगा. एंड आर्टिकल 19 दे सेज अबाउट ऑल ऑफ द restrictions we say. We will learn in detail, but just remember that these are all the goals of the constitution. Okay. Now we will see also separation of powers. Why our constitution ensures that we have a separation of power. ये separation of power क्या है और किस किस कौन सा गवर्नमेंट में हमारा सेपरेशन है. लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, and judiciary. These are the parts of the government where we ensure that a proper separation of power is incorporated. And do we have a separation of power? Example, जैसे कि हम क्यों सेपरेशन ऑफ पावर हम कर रहे हैं, बिकॉज टू इंश्योर द चेक एंड बैलेंस इन द सिस्टम. टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंस, व्हाट इज़ दैट? सपोज कुछ ऐसा लॉज हो जो कि डेस्पोटिक इन नेचर हो. डेस्पोटिक मतलब जहाँ पर कोई फ्रीडम को जब्त ना कर ले, आपका फ्रीडम को कोई ले ना ले. इसलिए हम जुडिशियरी को ये पावर देते हैं कि जो भी लॉज हमारा लेजिस्लेशन लेके आ रहा है उसमें जुडिशियरी का पावर हो कि वो इंश्योर करे कि स्टेट गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट डेस्पोटिक ना हो, फ्रीडम हमसे ना ले ले. डेस्पोटिक इज़ लाइक the ruler that take away the freedom, the government or the ruler that takes away the freedom of the people, then we say it is a despotic government or a despotic ruler. Okay, so this is what we know about separation of power. That is, we ensure the separations, powers are divided in between these organs so that they don't take away the rights of the people, and they ensure that each and everyone is having a check on the power. There should be limit to the power of the government. This is what our constitution is making sure of. Okay, so that's what we are so this is the way we are learning why our constitution is required and what are the features of the constitution which is helping us directly or indirectly. Getting my point? So we learned what is constitution, what are the goals of the constitution, and how we are making sure that constitution is doing so. Okay, कॉन्स्टिट्यूशन को
ये भी हम बोल सकते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेनेवर ये सब वर्ड आप याद कर लो, बिकॉज प्रीलिम्स में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएगा, जैसे इज द कॉन्स्टिट्यूशन ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब तब हम उस टाइम वहाँ पर बैठ के तो हम ये नहीं सोच सकते वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। सो दीज आर द फ्यू वर्ड्स दैट नीड टू बी understood by heart. Okay, so social contract is like यहाँ पर गवर्नमेंट हम पीपुल्स हम अपना रिप्रेजेंटेटिव एक बनाते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हमको आप रूल करो, बट ऐसे रूल करो कि हमारा राइट्स इंश्योर हो, हमारा राइट्स हनन ना हो। सो दिस इज़ अ two-way process in which we are giving the power to the government, expecting that our rules, that our rights are not extracted from us. So this is what we can say. Okay, और हमारा डेमोक्रेसी क्या है, इनडायरेक्ट इन नेचर है। हमारा जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है दैट इज़ इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट में हम बोल सकते हैं स्विट्ज़रलैंड इज़ द वन where they have a direct form of government, but we have an indirect form of government where we vote our MLAs and MPs, and they ultimately rule us through the representative set of government. Got my point? So we say leftist government, rightist government. What is that? So leftist government, just write it down with me. This is the important one because I always do have a confusion, so I hope you guys too. Write it down with me. Leftist government believes in liberal society. Okay, it believes in liberal society. Here it ensures a conservative one. It doesn't want the government to be changed. However, मतलब जैसा गवर्नमेंट चल रहा है वैसे ही होना चाहिए, no other changes they make sure, मतलब उनको कोई गवर्नमेंट में चेंज नहीं चाहिए। सपोज जैसा भी गवर्नमेंट चल रहा है वैसे ही हो। बट हमारा क्या, बट लेफ्टिस्ट का क्या है कि उनको एक लिबरल सेट ऑफ सोसाइटी चाहिए। वो हमेशा अनऑर्थोडॉक्स होता है, वो गवर्नमेंट से कुछ चेंजेस के लिए एक्सपेक्ट करता है। सो they believe in change in government. These are mainly atheist, मतलब they don't believe in government, but these are orthodox with the system. Okay, they believe that kings and aristocrats spoils the system. But they believe in no change in politics or in political system. Okay, write it down. They abolish privatization. They don't want the privatization to happen. Here they want they favor privatization. Just remember, this is an important point. They want the public enterprise. I hope my handwriting is visible or eligible to read, to read. So they want the public enterprise should run. They don't favor the privatization to happen. So this is what a leftist government and a rightist government is. Okay, so in the this is the overall thing that I want to say in this class. We will study
the rest in the next class. Hope you guys like it. If you guys like it, please सब्सक्राइब इट एंड डू मतलब लाइक, बट अगर अच्छा लगा या फिर नहीं भी लगा यार, लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है बहुत टाइम, अपना प्रिपरेशन से टाइम निकाल के मैं ये सब कर रही हूँ. सो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.